everyone, I'm Sharnath. Welcome back to my YouTube channel. So today in this video, I'll be talking to you what you should do in your college during the first year so that you can make the most out of it during your college days. And these are the collective things which I have seen in people or I have implemented in myself. So you can trust it and try it out once, and you should check whether it works or not. And if it works, then surely comment down in the videos and let me know in my inbox as well. So without wasting any time, let's get started. So I want to discuss the first point, which is you should do from the first year is networking with people. You should send connection requests to those people who are working in big companies or in big startups, and also you should connect with the people who are there in your college or the seniors. You should create a network with them, and also you should go beyond your college, and you should look for the other people who are there in other colleges and try to make connections with them, try to talk with them, try to have a conversation on what you like and all of the stuff. You will be getting a mutual thing and then start a conversation and all the stuff. So it would help you to grow and help you to know many things from them. And also, if you are from tier 3 or tier 2, it doesn't matter, but you can make friends with people from tier 1 college. If your interest matches and all of the stuff, you should network with them, and this can help you and this can lead you to a good place at the end of the day. Now the second point which I want to discuss is peer learning as well as the coding culture in your college. So what does it mean, peer learning? So peer learning basically means that you should work with your peers, like your friends, like साथ में, like suppose in a group competition or in a hackathon, you should go and you should try it out. Like you should participate in teams with your fellow mates, as well as you should learn different technologies. Just as for example, if I want to learn Flutter and then my friend also wants to learn Flutter, then we can research through the articles which are there in the internet or courses. Then we can curate those everything, and then we can start learning, and then we can build our apps. Then we can also build apps together and all the stuff. And that comes my third point, that you can also collaborate with people not from your college, also from your not only from your college but also from outside of your college. You can collaborate on projects. You can do open source contributions by collaborating with each other and all of the stuff. This will help you to work in a team, and also give you the skill of team building, and also it will help you to work on your soft skills and all of the stuff. Participate in hackathons because वो आपके soft skills के ऊपर बहुत काम करेगा. Try to give presentations. कैसे presentations देते हैं आप फॉलो कीजिए. आपको presentations and public speaking में कोई वीडियो चाहिए, then please comment it down. I'll be more happy to make you guys a video for you. And these are the things. And then try to socialize with people and get to know that क्या क्या चल रहा है मार्केट में and all of the stuff. And coding culture एक रहना एक बहुत जरूरी है. Try to, अगर आप CP बैकग्राउंड के हो तो try to solve questions साथ में. ऐसा नहीं कि हाँ मैं solutions देखता हूँ, ऐसा नहीं. तुम भी करो, वो भी करेगा, बट उसके बाद टैली करो किसका अप्रोच बेटर है. देन उसका अप्रोच बेटर है तो आप अडॉप्ट करो, या उसका तुम्हारा अप्रोच बेटर है तो वो अडॉप्ट करे. ऐसे करके ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट अराउंड योरसेल्फ, ताकि आपको करने में भी ना मजा आए. लाइक ऐसा ना हो कि अरे यार मोटिवेशन मिल जाएगी, अगर दूसरे को देखोगे तो ना मोटिवेशन आ जाएगी. एंड मोटिवेशन ढूंढने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका जो सर्कल होगा वही आपको मोटिवेट करते रहेगा. ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स रादर देन कि जो आपसे जलते हो या समथिंग लाइक दैट. ऐसा कॉलेज में बहुत होता है, एंड दैट्स प्रीटी मच कॉमन. बट ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपको बोले कि हाँ कर तेरे से होगा. तो ऐसे टाइप के दोस्त आप चुनिए एंड आप कंटिन्यू कीजिए उनके साथ दोस्ती. एंड ऑल्सो कोलैबोरेट कीजिए लोगों के साथ. सीनियर लोगों के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो. मैंने भी किया है, सो आप कर सकते हो. उनसे आपको सीखने के बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो. तो आपको गुड प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा, रादर देन आप बैड प्रैक्टिस कर रहे हो. आप जैसे कैसे करके कोड लिख रहे हो. कोड तो कोई भी लिख देगा, बट उसका एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर एक बेस होना चाहिए. सो यू शुड फॉलो दोस थिंग्स, राइट. सो आपको तब वो बात पता चलेगी, राइट. सो these are the things.
now I guess the fourth point, I lost my count, but maybe this is the fourth point, that you should start doing DSA, like not algorithms at first, but yeah, you should start with data structures. Just like if you are coming from a CS background, then you should start DSA by then, like after like आप oops भी पढ़ो, and आप, मेरे को पता है 11-12 में तो oops पे उतना फोकस नहीं होता है, जितने भी लोग बोले हाँ मेरे को बहुत अच्छा oops आता है, बहुत कम जन ही होता है, 0.1% को oops अच्छे से आती है, एंड बाकी लोगों को नहीं आती आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम 12। एंड oops आपके कॉलेज करिकुलम में भी लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप oops कीजिए, oops के बाद आप DA स्टार्ट कर दीजिए, एंड आपको बहुत, ये ऐसे नहीं कि मतलब बहुत रिगरसली स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्टार्ट विद एरेज, लीड कोड खोलिए, एरेज का एक बंच ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, वो सॉल्व कीजिए, देन स्टार्ट सॉल्विंग एरे क्वेश्चंस, एंड एक टाइम एक डेटा स्ट्रक्चर पे ना दे दीजिए। मेरी जो गलती थी, मैंने पूरा 2 साल तो एरे ही करने में लगा दिया था, ताकि एरे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे मत कीजिए, ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? लाइक एरे कीजिए, लिंक लिस्ट कीजिए, ट्रीज, ग्राफ्स एंड ऑल दिस स्टफ। एंड रिसोर्सेज के लिए डोंट वरी, रिसोर्सेज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्सेज आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, एंड सब फ्री होंगे, कोई पेड नहीं होगा, एंड आपको मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एंड उसके बाद डीएस करने के बाद स्टार्ट विद एल्गोरिदम्स। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसके भी मैं लिंक्स दे दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड वही कोर्सेज में सब कवर हो जाएंगे, डीएस एकदम प्रॉपर हो जाएगी। एंड ट्राई टू लाइक फिनिश रीडिंग द कॉन्सेप्ट बाय फर्स्ट ईयर की डीएस में क्या क्या है, तो आपको ना एक अच्छा बेस बन जाएगा। एंड सेकेंड ईयर में यू कैन स्टार्ट डूइंग सीपी, और यू कैन स्टार्ट डूइंग डेवलपमेंट, एंड आप फर्स्ट ईयर भी सीपी कर सकते हो, इट्स अ पॉइंट, क्योंकि एरे के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कोड शेप में, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दैट। आपको एक अच्छा सा एक फंडामेंटल क्रिएट हो जाएगा, अच्छा सा बेस क्रिएट हो जाएगा, ट्राई कीजिए वो आप, ठीक है? तो डीएसए का ये वाला पार्ट हो गया कि आप डीएसए स्टार्ट कीजिए। एंड हाँ, जो नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड्स है, ट्राई डू इट, आप थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी करने का कोशिश कीजिए, बट हाँ, जल्दी करने की कोशिश करने के लिए लाइक रूइंग मत कर दीजिएगा, लाइक ट्राई टू डू स्टफ, बट इन योर पेस, आपका जो पेस है। एंड सी सीखिए, आपके करिकुलम में ऑब्वियसली सी होगा इन द फर्स्ट ईयर, सी सीखिए, देन उसके बाद डीएसए पे जंप कीजिए, बस आपको बस, और ऊप्स भी करना, सी ऊप्स देन डीएस एंड देन एल्गोरिथम्स। ट्राई टू वर्क ऑन दिस पैटर्न, एंड आपका मे बी 1.5 साल लग जाएंगे खत्म करने में, अराउंड गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द स्टफ। एंड ये भी बात है कि आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप भूलने के भी चांसेस रहेंगे, तो ट्राई टू रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। 4 साल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड डीएसए ऐसी बात नहीं, कॉलेज के निकलने के बाद नहीं लगेगी, आप अगर जॉब स्विच भी करोगे उसके बाद, उसके तब भी आपको डीएसए लगेगी। तो ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, तो आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? नाउ द 5th पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन दैट इज स्टे इन टच विद द सीनियर्स। जो सीनियर्स है या सुपर सीनियर्स है, ठीक है, ट्राई टू स्टे इन कॉन्टैक्ट। जो कॉलेज के एलुमनी है, ट्राई टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम, एंड चीजें पूछिए, बात कीजिए। आपको आई गेस आपको कोई लाइकली चॉइसेस में मतलब सिमिलैरिटी वाले मिल जाएंगे आपके सीनियर्स, तो आप उनके साथ बात कीजिए, आप उनके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए प्रोजेक्ट्स में, लाइक ओपन सोर्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट ओके ऐसी चीजें काम करते हैं। आप इंडस्ट्री के बारे में पूछिए, आपको कंपनी के बारे में पूछिए, कंपनी में काम कैसे होता है, आप लोग क्या यूज करते हैं, ऑल दिस स्टफ थोड़ा बहुत पूछिए, बात कीजिए, एंड गाइडेंस भी लीजिए कि हाँ कैसे क्या होता है, ना होता है, मेरे को अब क्या करना चाहिए। ट्राई टू टॉक अबाउट देम, ठीक है? वही आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाएंगे। एंड ट्राई टू टॉक विद दोस मतलब सीरियस वाले बंदे, लाइक नॉट टाइप सीनियर्स, नॉट कि जो लोग मस्ती करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उन लोग को नहीं, लाइक जो अच्छे खासे पढ़ते हैं, जिन लोग का अच्छा सा पैकेज लगा है, एंड आपके साथ भी उन लोग की अच्छी मेल बैठ रही है, तो ट्राई टू टॉक विद देम एंड ट्राई टू हैव इंटरेक्शन विद देम, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन द फ्यूचर। एंड दे कैन ऑल्सो गिव यू रेफरल्स इन द कंपनी, यू स्टैंड आउट प्रीटी वेल आफ्टर देयर गाइडेंस, और अगर आप मतलब आपको अगर वो लोग पहचानते हैं तो यू विल ऑल्सो गेट रेफरल्स। So try to utilize that. And the last point and the most important point is that learn Git and GitHub. This will really help you not only in your development days in your college but also when you get in the company. आपको बहुत easy होगा। नहीं तो बहुत जगह मैंने सुना है कि लोग तो 1-2 दिन Git and GitHub करने में ही बिता देते हैं कंपनी के बाद जाके। So this is a very bad thing. I feel personally, because आप एक CS बैकग्राउंड के और आपको GitHub चलाना नहीं आता, एंड आप कंपनी में जाके अमेज़न या वैसी कंपनी में जाकर काम करोगे, क्या ही बताऊँ।
तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए एंड बी एक एडवांस स्टेप लीजिए ताकि आप थोड़ा बेटर कर सको एंड स्टैंड आउट कर सको एंड यही सब था. This much for this video. Now I'd like to talk about the sponsor of this video, that is Newton School. So Newton School is an Edtech startup who offer a full stack development course to the students who cleared their aptitude exam, and the sales team will contact you and give you access to the course, and then you can complete the course and you don't have to pay any kind of fees. But after getting placed, your package will be around, they claim that your package will be around 5 lakhs to 40 lakhs. And after you get the job, you can repay the money to them after you get the job. And also, not only that, companies also hire through Newton School to get good students and to get good engineers. So you can try it out. I will give the link in the description and every details will be there. You can go and visit there. So yeah, this much for this video. So if you like the content, then consider subscribing to the channel, as well share it with your friends and like the video, and comment down your thoughts, what you think of this video, as well as comment down any of the video suggestions you want from me. So this much for this video, and also the last point, be curious in your engineering journey, so that you can know that why it is working and why it is not, like how it is working and why I'm doing this and why I'm doing it not. So do you get my point, I guess? So be curious in your journey so that it can help you to grow. And so yeah, so this much. So I hope I'll meet you in the next video. So bye bye.